Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. Today it's the 14th of April 2021, and luckily or fortunately, we are in the first day of the Mahe Ramadan, the holy month in which the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala, Al Quran, was revealed on our lost and the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, as you know, that we have been going through the different poems in the poetry section of our English, and today I am with the first few lines of another poem that's called The Miracles, written by the Walt Whitman, an American poet. As you know, that miracle, let me remind you what's a miracle. Miracle is actually any happening which is actually beyond our imagination or simply an amazing or wonderful occurrence. For example, if a cricket team is supposed to hit 36 or 37 runs in 6 balls, this is usually an impossible task. When the batsman hits 6 sixes in 6 consecutive balls in an hour, and no ball is also being bowled by the bowler, so this is an unusual event. This is an unexpected thing that the 37 runs comes in just 6 balls or 7 balls. So at that moment, this is we call this miracle. Or simply when you see with your eyes that somebody is being crushed under a vehicle, if you see an accident that somebody goes, that a vehicle rolls over somebody, and if that man or that boy, if he is after this instant in position to stand upon his legs again, so we see that is a miracle. कशिर पे वन वैसे मेरेकल को मोइज़ यानी सो चीज़ इस चीज़ हैरान कर या युस का युस चीज़ आश कि नामुमकिन बनी मुमकिन अत चीज़ वन यसो मोइज़ यू को मेरेकल. So in these few lines, let me recite the first 2 lines. Why? Who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Walt Whitman, the poet here, says, why? Kyun? Who makes much of miracles? Behind these miracles, different miracles, if we see the world is full of the beautiful, lofty mountains, the meadows, different kind of people. No, the people or the face of the one man does not resemble with another. There are different varieties of flowers. We take different types of the foods. We taste them differently. There are aeroplanes flying in the air. There are different types of vehicles. The water has no color. The milk has its separate taste. We see the twinkling stars, the sun, the moon on the nighty skies, or the sun gives tremendous heat of light. It makes our universe shiny, and during the night, the moon and stars give a beautiful look in the universe or in the sky. So we see these things on part of the poet Whitman as miracle. यानी मेरे कहने का मतलब है कि मेरेकल जो है इसकी तशबीह जो की है शायर ने उन चीज़ों के साथ, यानी कुदरत ने जो चीज़ बनाई है दुनिया में, मेरे लिए कहता है शायर, मेरे लिए वो सब चीज़ जो है वो मौज़े हैं. तो यहाँ पर जो और कहता है, एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मेरेकल. अब शायर कहता है कि यहाँ पर कि मेरे लिए मेरी समझ से बाहर है. बहरहाल क्या है, कुदरत ने क्या बनाया है, क्रिएटर ने क्या बनाया है इस मेरी सिटी में या मेरे इर्द गिर्द, तो ये कहता है कि ये सब मेरे लिए मौज़े हैं, मिरेकल्स हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अंडरलाइन. Whether I walk the streets of Manhattan, as you know that I have made some words here in the red. I have written them in the red, like miracle is Manhattan is there, dot is there, wage is there, beach, woods, etc. So I have mentioned at the bottom these words, and I have given you the explanation or simply the meaning of these words. You can see मैंने इनके माने भी नीचे दिया है. तो मैं यहाँ पर मैनहट्टन जो एक्चुअली है, ये अमेरिका में एक है बिजी स्ट्रीट, यानी एक बहुत क्राउड बाज़ार होता है, जिसकी ज़िक्र इसने की है. किसने? शायर ने किया इसने, कि जब मैं इस रास्ते से गुज़रता हूँ, इस स्ट्रीट से गुज़रता हूँ, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कितनी क्राउडेड स्ट्रीट है. इसमें डिफरेंट किस्म के लोग हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ों की बिक्री होती है दुकानों पर, गाड़ियाँ हैं, बच्चे होते हैं, खिलौने बेचने वाले होते हैं, बहुत बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर. तो मेरे लिए सब कुछ ये मिरेकल है. और dart my sight over the roofs of houses towards the sky.
Now, the Walt Whitman says that whenever I see the lofty buildings, the big buildings, I see that the roofs of the buildings, they seem to touch the sky. He called this thing a miracle. Or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. There is wade. Wade is simply means when you walk through a shallow water. इन पानी से जब हम कैसी ऐसे पानी से गुजरें जो रिलेटिवली शैलो वाटर हो तो उसको बोलते हैं उसको वेडिंग. तो नेकड फीट का लफ्ज़ ये मानी होता है यहाँ पर नंगे पैर. तो ये कहता है यहाँ कि जब मैं बीच जो है समुद्री किनारा जो रेतीली जहाँ पर वो रेत थोड़ी सी हो तो जब पानी की लहरें उस समुद्र के किनारे या उस झील के किनारे की तरफ आ जाती हैं तो वो लहरें बाद में वापस चली जाती हैं. तो वहाँ पर आम जो लोग सैर तफरीह के लिए जाते हैं वहाँ नहाते हैं एंजॉय करते हैं. तो यहाँ पर शायर ने इस चीज़ को भी क्या कहा है मिरेकल मुआवजा कहा है. और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स और टॉक बाय डे विद एनीवन आई वॉक लव. नाउ हियर this poet says that whenever I go, when I ever happen to visit the forests or simply the woods, woods here mean the forest or the forest trees. जब भी मेरा गुजर कहीं जंगलों से या किसी सड़क के किनारे से जहाँ पेड़ पौधे लगे हों तो जब मैं किसी पेड़ या किसी दरख्त के साये में बैठता हूँ तो मैं आफताब की तपिश से बच जाता हूँ. तो मेरे लिए ये भी एक मिरेकल है यानी वंडरफुल. जैसे बड़े बड़े पहाड़ों में बड़े बड़े पेड़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन एंड अराउंड अस. तो इसको भी तशबीह दी है इसने मिरेकल से. और टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव या जब कभी मैं मेरे रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं मेरे रिश्तेदार हैं मेरे पेरेंट्स हैं मेरे कंपेन साथी हैं तो इन सब चीज़ों को देखकर मैं हैरान होता हूँ कि कुदरत ने मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरे बनाए हैं जो किसी से मिलता जुलता नहीं है. तो ये लोग भी मेरे लिए जो हैं मिरेकल हैं. और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट. तो व्हेनेवर आई सिट to eat something on a dining table, I see the different types of the delicious foods having different tastes. There are the dry fruits, there are the wet fruits, there are the juices, there is the milk, the mutton, the chicken, etc. I call all them the miracles. Or look at strangers opposed the riding in the car. तो जब मेरी नज़र पड़ती है दूसरी तरफ के मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मोटर गाड़ियों में सवार होते हैं तो यह चीज़ भी एक मेरे लिए एक अनोखी चीज़ है. तो मैं इस चीज़ को भी मुशाबियत देता हूँ किसके साथ मिरेकल्स के साथ. तो यही चंद लाइन्स थी जिनके बारे में आज हमने पढ़ा. तो नीचे जो मैंने दिखाए हैं आपको ये वर्ड्स एक्चुअली यही रेड में जो दिखाए वर्ड्स का मानी नीचे लिखा है. आप इस तरह से कॉपी में इसको नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे तो इंशाल्लाह कल अगर अल्लाह ने चाहा या आज ही चाहा तो मैं आपकी इस मिरेकल इस पोएम की दूसरा पोर्शन उसका लेक्चर वीडियो लेक्चर ग्रुप में डालूँगा. वालेकुम सलाम.